Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मु ऑलरेडी प्लस 2 सेकंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारछि एबे मु प्लस 3 CBCS ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोस गुडा अपलोड करिवि जदि भल लागिला ताले लाइक कर देबो एवं सब्सक्राइब कर देबो जो वीडियोस गुडा मु अपलोड करिवि तार नोटिफिकेशन पई एठी बेल आइकन को ऑल रे सेट कर देबो गोटे इंपोर्टेंट जिंस वीडियोस रो ऊपर एठी जो 3 डॉट्स देखुछो तार क्वालिटी एठी देखो बाय डिफॉल्ट 360 अछि तमे ताकू पढे मध्ये परिबो एठी एडवांस रे क्लिक करी तमे रिजोल्यूशन बढ़े परिबो प्रति वीडियोज रे मु पीडीएफ लिंक देबी ताकू एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रो तमे क्लिक करी डाउनलोड मध्ये करि परिबो पीडीएफ को लास्ट रे एठी जो मोर चैनल नेम अछि याकू क्लिक करी तमे एठी प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई की रखिथिबी तमे सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज टॉपिक रे आमे थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स विषय रे पढिबा जो थरे कि इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी हेल्महोत्ज एंड गिब्स फ्री एनर्जी विषय रे आमे देखिबा सो देखो जे कोनोसी थर्मोडायनामिक सिस्टम को आमे डिस्क्राइब करि परिबा बाय नोइंग इट्स थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट्स व्हिच आर द प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर एंड एंट्रोपी सो बाय नोइंग दीज कोऑर्डिनेट्स आमे सेई लॉज गुडा को बाहर करि परिबा which are governing the conversion of energy from one form to another okay गोटे फॉर्म रो आ गोटे फॉर्म को एनर्जी को हिसाब रे कन्वर्ट होची ताको भी जानि परिबा एंड वी कैन आल्सो ऑब्टेन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो ओके आउ अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी फॉर डूइंग द सेड वर्क याकू भी हमें स्टडी करि परिबा ता छडा एडिशनल इंफॉर्मेशन भी हमें पाई परिबा बाय defining certain thermodynamic variables which are called your thermodynamic potential बा thermodynamic function बोली की कहा जाए जाको कि हमें in terms of pressure volume temperature and entropy express करि परिबा so ए जो thermodynamic potential होची गोटे scalar function which can be used to represent the thermodynamic state of a system आउ यार concept को introduce करथिले Pierre Duhem in the year 1886 okay so now let us name and define the thermodynamic variables one by one so देखो जेमती हमें ऊपर देखिला जे कोनोसी गोटे सिस्टम रो स्टेट को हमें कंप्लीटली डिस्क्राइब करि परिबा बाय any two of the five state variables which are pressure volume temperature और fifth variable टा हला internal energy तबे ए जो internal energy को एक्चुअली हमें डिटरमाइन करि परिबा एटा होची गोटे स्टेट वेरिएबल by using the remaining four variables okay माने internal energy को हमें एक्सप्रेस करि परिबा in terms of p v t s केमती देखो फर्स्ट लॉ रो हमें जानि छु थर्मोडायनामिक्स रो फर्स्ट लॉ कहूची डेल्टा q इज इक्वल टू du प्लस p dv सेकंड लॉ कहला डेल्टा q इज इक्वल टू tds दैट मींस du प्लस p dv इज इक्वल टू tds और du इज इक्वल टू tds माइनस pdv सो ए इक्वेशन को लक्ष्य करो एथरु जणा पड़ुची जे हमें u को एक्सप्रेस करि पारुछु इन टर्म्स ऑफ pvts ओके सो ए जिंस एठी लेखिला u कैन बी एलिमिनेटेड एंड वी आर लेफ्ट विथ फोर स्टेट वेरिएबल्स व्हिच आर pvts only okay so this is the reason why four state variables are defined okay now taking two of the four variables जोटा कि pvts भितरु जे कोनोसी दुईटा को हमें एट ए टाइम नेबा ओके देन देयर आर सिक्स पॉसिबल पेयर्स pv pt ps vt vs और ts ई बडा छटा पेयर रो पॉसिबिलिटी अछि ओके अच्छा तबे ई छटा पेयर रो दुईटा पेयर हमें एलिमिनेट करि परिबा देखो प्रथम पेयर टा हला pv एक्चुअली इट इज कनेक्टेड विथ कंपोजिट आउ एटा होची गोटे एक्जेक्ट डिफरेंशियल क्वांटिटी व्हिच इज डेल्टा w बिकॉज डेल्टा w रो वैल्यू इक्वल टू pdv हुए सिमिलरली आ गोटे पेयर हला ts एटा भी डेल्टा q सहित कनेक्टेड बिकॉज डेल्टा q रो वैल्यू tds हुए तेणु करी एई दुईटा पेयर pv आउ ts एटा कैंसिल आउट हो गला बा एलिमिनेट कर देला हमें तेणु बाकी रहिला चारिटा पेयर pt ps vt आ vs ओके एई चारिटा पेयर thermodynamic variables रो they will each of them will correspond to a certain thermodynamic relation okay so ei हिसाब रे हमें चारिटा thermodynamic relation पाइबा which are known as Maxwell's thermodynamic relations okay या विषय रे हमें डिटेल
डेरिवेशन आपको पढ़िबा सो आमे देखिला देयर आर फोर थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स गोटे है इंटरनल एनर्जी सेकेंड वन हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी F equal to U minus Ts तापर एंथैल्पी H equal to U plus PV then Gibbs function or Gibbs free energy G equal to U plus PV minus Ts so এই जो चारिटा थर्मोडायनामिक पोटेंशियल आमे देखिला सो प्रत्येक जो मैक्सवेल्स थर्मोडायनामिक रिलेशन अच्छी चारिटा जो टोटल so each relation can be derived from one of these thermodynamic potential that is U, F, H, G respectively. Okay, so only four thermodynamic potentials are actually defined. Okay, so let us study them one by one. प्रथमे आसिला इंटरनल एनर्जी ऑलरेडी आमे एटा जानिछु इंटरनल एनर्जी कहले आमे total energy of a system को बुझिबा that means it is the total of the kinetic and potential energy of all the atoms and molecules of the system. Okay, अच्छा ता छोड़ा it can be transformed directly into heat और यार value टा actually can only be changed if the system ceases to be isolated. Okay, our internal energy होची function of volume and entropy. यार physical significance जदि देखिबा it is the capacity to do work plus the capacity to release heat. Okay, so the internal energy is the energy required to create a system. Okay, अच्छा तापरे जेमती आमे देखुतला as per the first law of thermodynamics dq is equal to du plus dw or du plus pdv तामाने du रो वैल्यू बाहरला dq minus pdv dq को आमे रिप्लेस करि परिबा by using the second law dq is equal to tds that means du रो वैल्यू आसिला केते tds minus pdv. Okay, so এই इक्वेशन रो आमे चेंज इन इंटरनल एनर्जी रो वैल्यू टाको पाई परचु सिस्टम रो in terms of four thermodynamic variables which are p v t s. Okay, so internal energy होची the first thermodynamic potential. Okay, so यार special case आमे देखि परिबा in case of your adiabatic process एठी heat constant रहे तेणु dq रो value equal to 0 that means du रो value हे गला केते minus pdv that is the work done by the system in an adiabatic process is at the expense of its internal energy. Okay, अच्छा second category रे isocoric process isocoric adiabatic process माने एठी isocoric हला volume constant adiabatic हला heat constant तेणु करी dv is 0 dq is 0 so du रो value मध्ये 0 हे गला माने no change in internal energy or the internal energy u is a constant. Okay, so the internal energy of the system remains constant in case of the isocoric adiabatic process. Okay, second एबे thermodynamic variable हला हमरो enthalpy. देखो enthalpy of a system is defined as the thermodynamic property of that system आ याको हमें describe करि परिबा as H equal to U plus PV. U हला internal energy PV ही गला pressure आउ volume तेबे এই enthalpy रो जदि आमे change को measure करबा को चाहूचु actually the change in enthalpy is a measure of the heat which is evolved or absorbed during a process at constant temperature. Constant temperature माने एटा isothermal process को ही बुझाइबो. So enthalpy is the energy which is required to create a system plus the work which is required to make the room for it. Okay, so এই जो word enthalpy actually याको এই enthalpy नाटा देइथिले कैमोलिन ओनस. ओके, मेजनर इफेक्ट रे यांकर बहुत अवदान अछि सेटा सॉलिड स्टेट फिजिक्स रे तमे पढिबो आकु. सो UPV माने इंटरनल एनर्जी प्रेशर आ वॉल्यूम ऑल दीज आर स्टेट वेरिएबल्स तेणु करी ई एंथैल्पी H must be also a state variable. आ यार डायमेंशन हला इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ योर एनर्जी and if the system is undergoing an infinitesimal reversible process then the change in enthalpy will be how much du plus pdv plus vdp केवल এই रिलेशन को हमें डिफरेंशिएट एठी कर देइछु. ओके, अच्छा एठी देखो du रो वैल्यू हमें ऊपर पाइथिला tds minus pdv से याको हमें रिप्लेस कर दबा एठी. सो माइनस प्लस
PdV कैंसल आउट हो सो आम रिलेशन केते आसिला DH रो वैल्यू आसिला TdS plus VdP. Let us now see some of the special cases. गोटे है reversible isobaric process. So एठी प्रेशर टा कांस्टेंट रहिबो, दैट मीन्स नो चेंज इन प्रेशर. DP रो वैल्यू हो गला 0, सो ए क्वांटिटी टा 0 हेबो. सो DH रो वैल्यू केते हला TdS, which is nothing but dq. Okay, so for an isobaric process the change in enthalpy is equal to the heat which is absorbed. तापरे गोटे आइसोबारिक एडियाबेटिक प्रोसेस माने प्रेशर कांस्टेंट, heat constant Tp equal to 0 which is also equal to dq रो वैल्यू भी 0. तेणु एई जगह dH रो वैल्यू 0 आसिला, that is there is no change in enthalpy or enthalpy remains constant. So in case of your reversible isobaric adiabatic process enthalpy रो वैल्यू टा constant रहिबो. ओके, ये हला सेकंड टाइप. एबे थर्ड टाइप रो थर्मोडायनामिक वेरिएबल हला हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, यार सिंबल हला F. Okay, it is also called the Helmholtz function. Okay, it is a thermodynamic property of the system. याको आमे डिफाइन करि परिबा as F equal to U minus TS. Okay, again U हला internal energy, T आउ S हला temperature and entropy. Okay, अच्छा, it is a measure of the ability of the system to do the useful or needful non-mechanical work in an isothermal process. Okay, ଆଉ ଏଇ जो Helmholtz free energy होची the energy which is required to create a system minus the energy you can get from the surrounding. Okay, तबे पुणी से पूर्व भलिया UTS ए हिसाब रे हम Helmholtz free energy को एक्सप्रेस करछु, किंतु ए UTS होची स्टेट वेरिएबल्स. तेणु ए Helmholtz free energy F will also be a state variable. आ यार डायमेंशन हबो इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ योर एनर्जी. अगेन फर्स्ट लॉ आउ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम यूज करिकी पाई परिबा du equal to TdS minus dW. So if the system is maintained at a constant temperature माने isothermal process by exchanging heat continuously with the surrounding, ताहले कोन हबो एबे आमे T रो वैल्यू जेतु कांस्टेंट अछि TdS को लिखि परिबा डिफरेंशियल ऑफ TS. एटा कांस्टेंट तेणु करी आमे डिफरेंशिएट करी भीतर को नै गले भी किछि असुविधा नहीं. सो du रो वैल्यू आसी गला केते d of TS minus dW or d of U minus TS is found to be equal to minus dW. तबे देखो ए जो d of U minus TS it is nothing but dF. Okay, so dF रो वैल्यू केते पाइला हमें minus dW. Okay, so एटा हला तमरा Helmholtz वर्क फंक्शन F which is equal to U minus TS. अच्छा, तबे आमर dF रो एक्चुअल वैल्यू टा जदि आमे बाहर करिबा d of U minus TS, that means एटा आसिला du minus TdS minus SDT. ओके, किंतु ए जो du रो वैल्यू आमे जानिछु TdS minus PdV ताको आमे ए जगह रे पुट करिबा. सो TdS प्लस माइनस कैंसिल हो जिवो, बाहरला रिजल्ट केते dF रो वैल्यू minus PdV minus SDT. ओके, सो ए इक्वेशन रो आमे चेंज इन Helmholtz free energy पाई पाइला during an infinitesimal reversible process. Okay, let us see some of the special cases. First hela गोटे irreversible isothermal process पाई temperature constant because isothermal, so dt रो value 0, so df रो value बाहरी जिवो minus pdv और pdv रो value आसिला minus df. Okay, thus the work done in case of a reversible isothermal process is equal to the decrease in the Helmholtz free energy. Decrease काहे की because एठी minus symbol अछि. तापरे second case हला for isothermal isochoric process माने temperature constant volume constant, so dt equal to 0 dv equal to 0, so ए जगह रे df रो value equal to 0 हबो. That means the Helmholtz free energy is not changing, it is remaining constant during the isothermal isochoric process. Okay, ये हला थर्ड टाइप रो थर्मोडायनामिक वेरिएबल. शेषरे फोर्थ टाइप रो थर्मोडायनामिक वेरिएबल हला गिब्स फंक्शन और गिब्स फ्री एनर्जी. देखो गिब्स फंक्शन और गिब्स फ्री एनर्जी होची गोटे थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम. याको हमें डिफाइन करि परिबा बाय सिंबल g which is equal to
H minus Ts. ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ Gibbs function G ହେଉଛି the energy which is liberated or absorbed during a reversible process at constant pressure and constant temperature. ଆଉ ଏଠି H ହେଇଗଲା enthalpy, S ହେଇଗଲା entropy, ଆଉ T ହେଇଗଲା temperature. ଆଚ୍ଛା, ଏଇ Gibbs free energy ର change जोटा कि delta G, actually it is very useful in indicating the condition under which a reaction will occur. Suppose delta G रो value टा जदि positive हैला, then the reaction will only occur if the energy is supplied to force it away from the equilibrium position. Similarly, delta G रो value जदि negative, ताहले the reaction will proceed spontaneously to the equilibrium. Okay, ଆଉ ଏଇ Gibbs function को ଆମେ Gibbs free energy or simply Gibbs energy ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ. Okay, thus Gibbs energy of a system is defined as the maximum amount of energy which is available to a system during a process that can be converted into useful work. माने it is the measure of the capacity to do the useful non-mechanical work. Okay, it gives free energy hoji the total energy which is required to create a system and make room for it minus the energy you are getting from the surrounding. Okay, तेणु करी एंथाल्पी जो H रो वैल्यू आमे पाइथिला ताकू आमे जदि एक्सप्रेस कर दबा तार जो वैल्यू टा ताले G इक्वल टू U माइनस Ts प्लस PV हम. ओके, बिकज एठी देख आम एंथाल्पी जोटा थिला H रो वैल्यू U प्लस PV हुए, तेणु U प्लस PV माइनस Ts एठी तले आसिला. एठी आम F जो अच्छी F रो वैल्यू पाइथिला आम U माइनस Ts, सो एठी U माइनस Ts को आम रिप्लेस कर देला जदि F रे, ताले G रो वैल्यू केते पाइला F प्लस PV. ओके, सो एटा भी गोटे रिलेशन बिटवीन द हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी and Gibbs function. Okay, or Helmholtz function Gibbs function भितर एटा गोटे रिलेशन. अच्छा, एंथाल्पी जो H इक्वल टू U प्लस PV जेहेतु आम पाइछु, सो ताकू भी जदि आम पुट करला ऊपर जो फर्स्ट रिलेशन देखी सेटा आसीगला G इक्वल टू H प्लस Ts और H रो वैल्यू पाइला आम G प्लस Ts, दैट इज एंथाल्पी इज इक्वल टू Gibbs फ्री एनर्जी प्लस योर latent heat. Okay, let us see some of the special cases. देखो गोटे जदि आम आइसोथर्माल प्रोसेस नौचु ताले एठी टेम्परेचर कांस्टेंट, सो ऊपर जमती आम देखी TDS को आम लिखि परिबा एज द डिफरेंशियल ऑफ TS. ओके, T को आम भीतर को नहीं गला. नाउ सेकंड केस रे गोटे आइसोबारिक प्रोसेस where the pressure is constant, so dP equal to 0. ताले if the process is both isothermal and isobaric, ताले एबे कोन हबो dH रो वैल्यू हे जिवो इक्वल टू d of Ts. काहे कि एमती हला, बिकॉज देखो आमे जो एंथाल्पी H रो वैल्यू पाइथिला केते H इज इक्वल टू U प्लस PV. ओके, सो U प्लस PV ऊपर आमे dH रो वैल्यू ऑलरेडी पाइथिला इन केस ऑफ आइसोथर्मल आइसोबारिक प्रोसेस. जो H रो वैल्यू देखो दिस वन. ओके, सो एठी देखो ए रिलेशन रे आमे DH रो वैल्यू पाइथिला TDS प्लस VDP. ओके, अच्छा, जदि आइसोथर्मल ताले TDS को आमे एक्सप्रेस कर देला D ऑफ TS, आउ आइसोबारिक ताले VDP अछि, DP रो वैल्यू 0 आसिला, तेणु करी DH रो वैल्यू आसिला केते D ऑफ TS. ओके, से जिनसटा एठी तळे लेखा हिची. ओके, सो पुणी वापस जिबा आमे दिस वन. सो DH रो वैल्यू आमे पाइला केते D ऑफ TS. अच्छा, या को आमे लिखि परिबा D ऑफ H minus TS which is equal to 0, and H minus TS is nothing but your Gibbs function G. So dG is equal to 0, or there is no change in Gibbs function or Gibbs free energy G is found to be a constant केतेबेले in case of your isothermal isobaric process. Okay, so एटा constant pressure रे constant temperature रे यार value मध्य constant रहुची. Thus the Gibbs function G or Gibbs free energy remains constant in isothermal isobaric process. So जेते सब thermodynamic variables or thermodynamic potential अछि ताको आमे देखो एई टेबल रे एक्सप्रेस करि परिबा.
सो फास्ट है इंटरनल एनर्जी सिंबल फॉर्मूला तार नेचुरल वेरिएबल्स जोटा कि एंट्रोपी आउ वॉल्यूम सेकेंड रे एंथैल्पी सिंबल फॉर्मूला एंड नेचुरल वेरिएबल्स ए हिसाब रे बाकी दुईटा भी तेबे गोटे जिनस लक्ष्य कर ये गोटे फिफ्थ थर्मोडायनामिक पोटेंशियल आम देखा पाचु विच इज लांडाउ पोटेंशियल और ग्रांड पोटेंशियल यार सिंबल है ओम या एक्चुअली स्टैटिस्टिकली इट इज रिलेटेड ओके सो डिटेल यार स्टैटिस्टिकल मेकानिक्स जिते पढ़ो आम पढ़ा सो या आम फॉर्मूला यार लिखिपर एज एफ माइनस समेसन ऑफ म्यू आई एन आई एफ होगला ये तुम हेल्महोत्ज़ फ्री एनर्जी आउ नेचुरल वेरिएबल्स यार है एज टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ओके सो ये लांडाउ पोटेंशियल विषय ब्रीफली जदि आम देखा एक्चुअली ये ग्रांड पोटेंशियल बा ग्रांड कैनोनिकल पोटेंशियल भी जार सिंबल है ओम या आम डिफाइन करवा एज एफ माइनस म्यू एन ओके पर एफ इज द फ्री एनर्जी यू माइनस टी एस ओके सो ये हेल्महोत्ज़ फ्री एनर्जी यहाँ है टेम्परेचर एस है एंट्रोपी तबे ये म्यू हूँ केमिकल पोटेंशियल ओके आउ एन होगला ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सिस्टम ओके फाइनली let us see the significance of thermodynamic potential देखो in case of a mechanical system it is said to be in stable equilibrium केते बेले हेबो जेते बेले यार potential energy टा minimum रहिबो okay that means the system must proceed in such a direction so as to acquire minimum potential energy okay so प्रकृति रे बा नेचर रे भी ए जिनसटा ऑब्जर्व करा जाए for example the water flows from higher level to lower level or electric current flows from higher to lower potential or heat flows from higher to lower temperature or a body falls from higher to lower potential due to the gravitational field and so on okay so these are different types of examples which are showing us that the system mechanical system जोटा कि stable equilibrium रे रहिबा पई कोन करूची in order to acquire the minimum potential energy okay so in case of your thermodynamics the behavior of internal energy Helmholtz free energy enthalpy और Gibbs free energy जोटा कि thermodynamic potential चारिटा this is also similar to your potential energy in case of your mechanics okay thermodynamics रे चारिटा thermodynamic potential रो behavior जहाँ potential energy रो behavior in case of your mechanics मध्य सेया so आमे जेमती देखिचु जे direction of isothermal isochoric process is such that to make the Helmholtz free energy minimum जो zero होउथला okay similarly in case of isothermal isobaric process Gibbs free energy टा zero बा minimum होउथला आउ isobaric adiabatic process रे enthalpy टा minimum बा zero होउथला okay so the four functions U, F, H, G play a very vital role in thermodynamics and this role is very much same as played by the potential energy in case of your mechanics hence they are called thermodynamic potential okay ei thermodynamic variables को एथि पई ता सहित potential word टा जोड़ी की कहा जाए okay because इटा potential energy सहित equivalent in case of your mechanics okay now let us see the importance of these thermodynamic potentials देख यहाँ मु दुईटा बही रू एडिट करके पेस्ट करिछि तो ऊपर जो सिग्निफिकेंस देखिला एठी इंपोर्टेंस प्राय समान ही लिखा अछि ओके सो से जोटा पुणी थरे लिखा है रिपीट करिकी तमे नोट करला बेलको से जिनसटा को आ रिपीट करिवनी सो एठी भी देख कहूची गोटे थर्मोडायनामिक पोटेंशियल बा फंक्शन एक्चुअली बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करे इन केस ऑफ स्टडी ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ ए सिस्टम सपोज गोटे सिस्टम आम कनसीडर कला जो थे कि टेम्परेचर और वॉल्यूम टा कांस्टेंट अच्छी माने गोटे आइसोथर्माल आइसोकोरिक सिस्टम ओके ताले चेंज इन हेल्महोत्ज़ एनर्जी डी एफ रो वैल्यू आम ऊपर जमी देखुला यार वैल्यू आसला के जीरो बिकज डी भी जीरो डी टी जीरो और एफ रो वैल्यू टा मिनिमम है सो व्हेन द हेल्महोत्ज़ फ्री एनर्जी एफ इज मिनिमम दैट मीन्स डी एफ इज इक्वल टू जीरो सो यहाँ कौन रेफर कर
जे सिस्टमटा इक्विलिब्रियम रे रहुची. Okay, so this is very much similar to the fact that a mechanical system is in stable equilibrium and possess a minimum value of the potential energy. Okay, ये गला हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी रो मिनिमम केस. सिमिलरली आमे गिब्स फ्री एनर्जी रो भी देखि परिबा. dg कैन बी इक्वल टू 0. आ ये सूचौची गोटे कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम of a system which is attained for those system in which the temperature and pressure remain constant, माने isothermal isobaric process. Thus we can state that the thermodynamic potential UFGH, they describe the state of the system in a similar way as the thermodynamic coordinates pressure, volume, temperature and entropy describe the state of a thermodynamic system. Okay, so এটা দুইটা যাক equivalent case. Okay, so when we have 8 thermodynamic quantities, মানে pressure, volume, temperature, entropy, then internal energy, then your Helmholtz free energy, Gibbs free energy and enthalpy, এই 8টা thermodynamic quantity যেତେବେଳେ ଆମେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ନେଉଛୁ, ତେବେ any two of these quantities can be used as the thermodynamic coordinates in order to study the behavior of a thermodynamic system, and all these 8 variables or quantities are mutually related to each other. ତେବେ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନୋଟ୍ କର, important ଜିନିଷ ଯେ du, df, dh ଆଉ dg এই চারিটা হଉଛି perfect differentials. Okay, so if the change in the value of any function is independent of the particular path and it depends only upon the initial and final position. Okay, को path रे से change टा होची ता ऊपर depend न करे कि केवल starting आउ ending माने initial आउ final position ऊपर जदि depend करूची ताले सेही प्रकार केस रे this type of change in the function will be denoted as the perfect differential, जोटा कि आसिला internal energy, Helmholtz free energy, enthalpy और Gibbs free energy. Okay, all these four are path independent such that they are perfect differential. Okay, so it is also referred as exact differential or total differential. ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିଲା ଏଇ ଯୋଉ thermodynamic potential ହେଉଛି perfect differential and path independent. Okay, Thank you.